Welcome back to the session of physics class 7. We are studying chapter number 1, that is physical quantities and measurement. तो इसी चैप्टर में न्यू टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेंसिटी. टॉपिक इज डेंसिटी. डेंसिटी नाम टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी किसको कहते हैं. क्या चीज डेंसिटी का डिस्कस करेंगे. डेंसिटी is an amount of mass contained in a unit volume of substance. तो किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास यूनिट वॉल्यूम में जितना होगा वो उसका डेंसिटी कहलाएगा. और अनदर वर्ड वी कैन से दैट it represents the how dense is the substance, how the arrangement of the molecules. They are very compact and usually decides the density of the substance. So first, we want to know the density in definition. So the density of the substance is defined as the quantity of mass contained in unit volume of a substance. Let us let us suppose the mass of the substance is m किलोग्राम. तो मानते हैं किसी सब्सटेंस का जो वेट है, जो मास है, m किलोग्राम है and volume is p meter cube. So the density of the substance will be equal to mass over volume, that is किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये इसका फॉर्मूला हम ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर मास किलोग्राम में और वॉल्यूम इसका मीटर क्यूब में हो सकता है. अब हम लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वो 700 किलोग्राम है. 700 किलोग्राम. और let the mass of our substance is 700 gram and shape is cuboid. ये सब्सटेंस है जिसका की मास 700 है और इसका शेप क्यूबॉइड है. तो कैसे इसका डेंसिटी फाइंड करेंगे. सबसे पहले इसका मास कैन बी मेजर बाय beam balance, beam or electronic sheet beam.
फिर हम मेजर कर सकते हैं। इसमें भी दिखा रहा है उसको 700 ग्राम। एंड वॉल्यूम, this is the void field of the object, and its length 8 centimeter. Suppose this is 8 centimeter, this is 15 centimeter, and height is 10 centimeter. So volume will be length multiplied by breadth multiplied by height. Length, breadth, and height. So this would be length is 3 centimeter, breadth is 8 centimeter, and height is 10 centimeter. Then it would be 1400 centimeter cube. 12 centimeter cube. इसका वॉल्यूम आ चुका है. Now we'll find the density of this substance. So substance का कैसे निकालेंगे? Simple formula से mass upon volume. We put the values of this equation and find out the density of it. So we have mass equal to 700 grams and volume is 1200 centimeter cube. So density will be, formula is mass over volume. Now putting the values, in formula, so we get mass is 700 grams and 1200 is volume, is centimeter cube. So when we calculate, we get 0.583 gram per centimeter cube. तो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. Now we'll find the speed. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाला है स्पीड. स्पीड क्या होती है? चलिए स्पीड की बात करते हैं तो हम वहां पर मूवमेंट की बात करते हैं. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज पर यूनिट समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड कहलाती है. तो स्पीड फॉर्मूला अगर हम देखें तो दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग. So distance will be meter or time being seconds. So SI unit जो इसका है, SI unit of speed is meter per second or meter s raised to the power -1. You can write like this. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. If distance is given in kilometer and time is hour, so this will be kilometer per hour. Its
जनरली जो किलोमीटर पर आवर है स्पीड की हम एरोप्लेन्स है, बसेस है, ट्रेन है, इनकी डिस्टेंस, इनकी स्पीड को निकालने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर स्पीड कम होती है, जहाँ पर मीटर थोड़ा डिस्टेंस होता है, वहां पर हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस स्पीड को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्पीड को, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। फिर एक और चीज हमें डिस्कस करने वाली है, दैट इज स्पीडोमीटर क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो व्हीकल्स है, बाइक्स है, मोटर बाइक्स है, ट्रक्स है, ट्रेन, एरोप्लेन में एक स्केल होता है which indicates the speed of the vehicle। बताता है कि ये हमारी गाड़ी किस स्पीड चल रही है, 150 स्पीड चल रही है, 120 स्पीड चल रही है, वो हमें लगातार खाता रहता है। दैट पैनल, दैट डिवाइस इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। तो पता है व्हीकल्स दैट्स कॉल्ड स्पीडोमीटर। Vehicles have a large device which shows the speed of the vehicle called speedometer। ये आपको इस तरीके से टाइल दिख रहा होगा, यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, इस तरीके से टाइल्स दिख रहा होगा। तो दिस इज द स्पीडोमीटर, मेजर स्पीड, स्पीड को मेजर करता है। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है, इसका नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर a device in vehicle which shows the distance traveled by the vehicle। तो व्हीकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस टाइम पीरियड में, तो उसकी डिस्टेंस को दिखाता है। उस डिवाइस को कहा जाता है ओडोमीटर। और ये किलोमीटर में रीडिंग देता है। किलोमीटर। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशंस आल्सो। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्ट। एंड क्वेश्चन इज bus travels, एक बस है जो ट्रेवल करती है 720 किलोमीटर्स in 9 hours। What is its speed? उसकी स्पीड क्या होगी? तो फर्स्ट व्हाट वी डू, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम व्हाट वी हैव गिवन, जो भी हमें गिवन है उसको हम लिख देंगे। सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने
Distance है 720 किलोमीटर, that is PM short form. And time कितना लगा है उसको, time taken, that is 9 hours. So by the formula of speed equal to distance one time. Distance is 720 kilometer. Time is 9 hours. So when we calculate 80 kilometer per hour, so we get the speed of the vehicle is 80 kilometer per hour. तो आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, that is based on the density question is a piece of an object has a volume of 30 centimeter cube and a mass of 153 gram. Find the density of the object in kilogram per meter cube. तो हमें ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, जिसमें वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर क्यूब और उस ऑब्जेक्ट का मास है 153 ग्राम। तो फाइंड करना है डेंसिटी ऑब्जेक्ट की, बट हमें डेंसिटी चाहिए होगी किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फर्स्ट व्हाट वी डू, the solution is mass we have given, that is 153 gram, we convert into kilogram. So this will be 153 divided by 1000, because 1 kilogram is equal to 1000 gram. So 1 gram equal to 1000 grams. So this will be 0.153 kilogram. And the volume is 30 centimeter cube. So this would be 30 into 10, 1 centimeter equal to 100. So won't give it 30 into 10 to the power 6 meter cube. This is converted into meter cube. Centimeter is meter cube. So density will be mass over volume. So mass is, we have given 0.153, our volume is 30 into 10 raised to the power minus 6. When we calculate, we get 1500 kilogram per meter cube. This is the density of the object. Now we solve another example of area. जब हम area क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, question is
the diameter of a circular path is 25 meters. Find the surface area. इसी सर्कुलर पाथ का हमको diameter दिया हुआ है. Circular path means this type of circular path, and this is diameter. This is called diameter. तो ये दिया हुआ है आपको 25 मीटर. और पूछा है इसका सरफेस एरिया हमको निकालना है. Circumference this we have to find circumference of this circle. So diameter is equal to 25 meter, and we know that radius is equal to diameter by 2. This is 25 by 2. This would be 12.5 meter. And now surface area. Or maybe area of this circle is pi into radius is square. Radius is 12.5. Pi is as it is. This is 12.5. So we root square. When we calculate, find it 490.625 meter square. This is the surface area of this circle. First, next the next chapter, second chapter. Thank you, goodbye, and please subscribe करके रहिए मेरे चैनल. Keep watching our videos. चैनल का नाम है @BBS Vishwa. Very much. Have a nice day.